Let's get on with the show. Now today is all about India's surging soft power, India's growing global clout, powered by everything from its vibrant tapestry of movies and music to its phenomenal sporting achievements. That's right, and that's why the inaugural is called Soft Power, Hard Gains. And with that, we are officially all set after Bundesliga as well to kick things off on the inaugural, isn't it, Neha? Haha, nice wordplay there, Krishna, with terminology from the world of sports. Because our first session, ladies and gentlemen, is titled Gearing Up for Sports Ascendancy. Even as the Indian cricket team dominates the world of cricket, India has long gone from being a one-sport nation. Today, India is a force to reckon with in a range of sporting arenas. And one man is playing a crucial role in that evolution. Take a look. One spear can pierce through the world. One fall can it dreams of a billion. Right, we will, pretty much get on with things because we have the two gentlemen on stage already who are going to be the main gentlemen of this session who will be telling us all about it. That is Mr. Barun Das and, of course, Shri Anurag Thakur. Ladies and gentlemen, once again, a huge round of applause. Requesting TV9 Networks, Meha Bharadwaj and Sumaira to please take the stage and conduct this session and get the ball rolling. Ladies, all yours. Good evening, ladies and gentlemen. It's the first session, so it better be good because it'll set the tone for what's to come. But in our experience, when we're talking about sports and entertainment, it's never dull. So we're gearing up for sports ascendancy, and who better than Shri Anurag Thakur, somebody who understands sports, somebody who is, who's played cricket himself, and also now somebody who is the sports minister of the country. I also have our MD and CEO, somebody who understands the business of sports, Mr. Barun Das here. So without further ado, let me get straight into this conversation. There's Pulela Gopichand here as well. At some point, we are going to involve him in this discussion as well. But let's start with Mr. Thakur. Sir, the buzzword today is soft power. Mr. Thakur, and sports is an integral part of it, sir. Cricket, we know, is already a superpower in the country. How can we bring in the lessons that we've learned from cricket to make other sports as successful? Thank you for starting the session. And let me just say this, that if you look at 1983, before that, even in cricket, you didn't have enough money. When the Indian cricket team won, even the BCCI didn't have enough money to pay them or to celebrate in a big way. But when they fought the case against Prasar Bharati and won the case, that is where they won the telecast rights and the game changed. Then the money came into the field of cricket, and that is how the Indian Cricket Board, the BCCI, how they done well with the professional working of BCCI for the last so many years. And over the last 2-3 decades, we have seen one after another cricketer who have come up on the international stage and done extremely well. So in cricket, we had a lot of stars to look up to. And today, in other sports also, we have a lot of stars we can look up to. So I think the time has started when the country, the mindset has changed, the way Prime Minister Modi said, "Kheloge to khiloge." It's all about participation, it's all about your involvement in sports rather than just thinking about winning and all that. On one hand, the government has increased the sports budget 3 times in the last 10 years. Apart than that, we have spent close to 3,000 crore rupees on creating about 300 sports infrastructure. Apart than that, we have a lot of other schemes
for the benefit of schemes, for the benefit of players, so that they can perform well rather than worry about their facilities, how they can train, where they can train, who will fund for that. Now that is not the worry today. They all need to think about training hard and performing at the national and at the international stage. And that is why India has won for the first time ever 100 plus medals in the Asian Games. अनुराग जी, क्योंकि सॉफ्ट पावर की बात हो रही है और वो बज़वर्ड है आज का, तो इसी से जुड़ा एक और सवाल ये कि हमारी भारत की जो इस समय दुनिया में जो स्थान है, जो जगह है और जहां हम पहुंच रहे हैं, जहां हम पहुंचने का लक्ष्य रखते हैं, सॉफ्ट पावर से हार्ड गेन्स संभव हैं? मुझे लगता है गेन के बारे में क्यों सोचते हो? मैंने एक शब्द अपने पिछले उत्तर में कहा, खेलोगे तो खेलोगे। आपको तो अपना कर्तव्य निभाना है, कर्म करने, बाकी फल की चिंता नहीं करनी है। और आज का भारत अपने कर्म कर रहा है, फल अपने आप मिल रहे हैं। कहाँ 10वीं लड़खड़ाती चरमराती अर्थव्यवस्था थी, आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हम बनकर खड़े हो गए हैं। और जब मोदी जी तीसरी बार आएंगे तो विल बिकम द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। सो हमें अपने एफर्ट्स में कोई कमी नहीं करनी चाहिए। इसलिए मैं कई बार खिलाड़ियों से भी कहता हूं कि आपको अपना जो पार्ट है वो प्ले करना है, मुझे अपना करना है। एक समय था जब खिलाड़ी को लगता था कि परिवार में अगर कोई रिक्शा चलाने वाला है, मान लो पिता कोई चाय बेचने वाला है, कोई सब्जी बेचने वाला है, तो उसका बच्चा यहाँ तक कैसे पहुँचेगा। आज मैं आप सबकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ, आज खेलो इंडिया अभियान के बाद, टॉप स्कीम के बाद, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम में बोर्डिंग, लॉजिंग, ट्रेनिंग सारा खर्चा भारत सरकार वहन करती है। और जो एलीट एथलीट है उसको 6 लाख रुपया साल का जेब खर्च अलग से देती है खेलने के लिए, ट्रेनिंग करने के लिए। और इसी तरह से जो डेवलपमेंट एथलीट है उसको 3 लाख जेब खर्च अलग से देती है। और बाकी सारा बोर्डिंग, लॉजिंग, ट्रेनिंग देश और विदेश का सारा खर्चा भारत सरकार करती है। फिर आता है खेलो इंडिया एक्रेडिटेड एकेडमी। मान लीजिए पुलेला गोपीचंद की एकेडमी चलती है, वहाँ पे किसी खिलाड़ी को जाके सिलेक्शन होकर ट्रायल दिया, खेले, तो उनको 5 लाख रुपया बोर्डिंग, लॉजिंग, ट्रेनिंग के लिए और 1,20,000 रुपये जेब खर्च के लिए अलग से मिलता है। ऐसे 3,000 खिलाड़ियों को प्राइवेट एकेडमीज में भारत सरकार फंड कर रही है ताकि पूर्व खिलाड़ी उनको अच्छी ट्रेनिंग दे सकें और भारत के लिए खेल सकें। लगभग 23 नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बना दिए हैं, 69 साइट ट्रेनिंग सेंटर हैं। और आज़ादी के जब हम 75 वर्ष मना रहे थे साल पहले, तो मैंने कहा था 750 हम खेलो इंडिया सेंटर बनाएंगे। आज मैं इस मंच पे कह रहा हूँ 750 नहीं, 750 नहीं, 1075 1075 हमने पूरे कर दिए। सो दैट इज द स्पीड, साइज एंड स्केल एट विच वी आर वर्किंग टुडे। अभी बहुत आगे जाना है। राज्य की सरकारें भी अगर, क्योंकि स्पोर्ट्स इज अ स्टेट सब्जेक्ट, अगर राज्य की सरकारें थोड़ी मदद करेंगी, थोड़ा और अच्छा करेंगी, तो भारत जैसे देश में 36 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में से अगर 20 भी अच्छा कर लें, तो मैं कह सकता हूं जो लक्ष्य मैंने 2036 के लिए रखा है कि इंडिया दुनिया की पहली 10 मेडल विनिंग कंट्रीज में से एक हो और 2047 तक हम दुनिया के पहले 5 देशों में हो जो मेडल जीतने वालों में हैं। Now, we'll talk about that bid for Olympics for 2036, sir, but let's also get Barun to talk to us about soft power. You had that in your keynote address, sir. I want to ask you, what is the role that media can play in building a brand for India when it comes to that being used as soft power? Thank you, Meha. I think fundamentally, media exists without any specific objective. Media is supposed to be a social catalyst. I mean, if you talk about news media. So we reflect the society and we act as a social catalyst. But as part of the largest news network of a country, what I see is that as far as sports and entertainment is concerned, it's an exciting time for India, like in many other spheres. First of all, I think
the winner is first born in the mind, and then you have to have an intent to win, which is what I think the Prime Minister's leadership and Anurag's guidance had happened and instituted in India, where Indians want to win. Which is what, as a media custodian, as a largest news network, we should try and reflect. There are excellences which we are saying. Obviously, what keeps coming to my mind is Gopi, who's sitting here, good friend. He's shown that he was possibly the second All England champion after about 29 years or so. He won it all by himself. But then he decided that he'll create many champions, so he set up that academy, and then, as Anurag ji said, that the nation is supporting, the administration and the government is supporting that. So this acts as a very, I think it's a self-fueling positive spiral which will only grow from now. See, as far as the media is concerned, let me add something to that. When I used to play cricket, rather than the money or the cash prize, it is the next day news in the newspapers, which is to encourage like sports person like us, कि अच्छा अखबार में नाम छप गया, अब देश में हमें लोग जानते हैं. तो मीडिया एक बहुत बड़ा रोल अदा कर सकता है, वो पैसों से बहुत बड़ा है, आपको पहचान दिलाने का. Right. Sir, I will just, absolutely. This is a very good point that unless and until we bring that to limelight, we celebrate those successes, the successes will remain confined to some corners here and there. So that definitely is a role that media has to play. अनुराग जी, और अभी क्योंकि आपने कहा कि जब आप क्रिकेट खेलते थे, तो ये एक सवाल ज़रूर सबके मन में आता है कि क्रिकेट भी आपका पैशन है, पॉलिटिक्स भी आपका पैशन है, तो एक पैशन को छोड़कर दूसरे पैशन को चुना है, या वो साथ साथ कैसे, मतलब क्रिकेट को छोड़ा कैसे, राजनीति की तरफ ज़्यादा पैशनेट कैसे हो गए? देखिए, छोड़ना कोई नहीं चाहता. मैं पंजाब की और नॉर्थ जोन की टीम का कैप्टन था, ऑल इंडिया चैंपियन रहे, अंडर 16, अंडर 19, नॉर्थ जोन अंडर 19, ऑल इंडिया चैंपियन, अंडर 19 कैंप से लेकर रणजी ट्रॉफी तक सब खेले. लेकिन बहुत छोटी उम्र में छोड़ना पड़ गया, परिवार की परिस्थितियां ऐसी थी. लेकिन जब मैं 25 साल की उम्र में हिमाचल क्रिकेट संघ का अध्यक्ष बना, तब सबसे बड़ी चुनौती थी कि स्टेट में एक भी ग्राउंड नहीं है, कोई बड़ा मैच नहीं होता, कोई मैच जीता नहीं. एट द एज ऑफ 26, I built that Dharamshala Cricket Stadium without any government, without even a single penny from any government, neither central nor the state government. तो एक जुनून था कुछ करने का, वापस गेम को देने का. और जब वहाँ अच्छा किया तो उसमें राजनीति आ गई, राजनीति लोग आ गए, और मैं जो राजनीति से 100 कदम दूर था, मेरे लिए भी राजनीति के द्वार खुल गए. आज मैं आपके सामने चौथी बार का लोकसभा MP बैठा हूँ. वो स्टेडियम नहीं बनाया होता तो शायद यहाँ नहीं होता. तो ईश्वर ने आपके लिए कहाँ लेके जाना, उसके रास्ते बना के रखे हैं. आपको केवल अपना कर्म करना है. मैंने पहले भी कहा, मैं क्रिकेट खेलना चाहता था. मेरे पिता मुझे फौजी बनाना चाहते थे, वो खुद प्रोफेसर थे. मेरे दादा परदादा फौजी थे. मैं तीसरी बार सांसद बना, तब जाके मैंने 2016 में टेरिटोरियल आर्मी में मैं लेफ्टिनेंट बना. अब मैं कैप्टन हूँ. अब मैंने मेजर का एग्ज़ाम दिया, देखता हूँ पास हो गया तो थोड़ी दिनों में मेजर भी बन जाऊँगा. तो आप कहाँ जा सकते हो कोई पता नहीं चलता. तो जहाँ पे भी आप हो, वो आप काम अच्छे करते रहें. Sir, Paris Olympics is 5 months away. This is a headline question now. What are you expecting from our Indian athletes? Are we going to better Tokyo? If you look at Tokyo Olympics, we were facing the COVID-19 pandemic at that time. It was very hard to train the players locally or maybe overseas. But we provided them all kind of help. Look at Mirabai Chanu. She got injured in India. Yeah. Within 24 hours, she was given the US visa. We sent her coach and physio with her. After that, the visa was stopped and the entry was banned into US also. So she trained in US for 6 months. Many of our athletes were training overseas in Europe. She flew directly from US to Japan in Tokyo. And the first medal won for India at Tokyo Olympic was by Mirabai Chanu. Yeah. So that is how the government of India helped her with funding her recovery and everything, and she won us the medal. So मैं यही कहता हूँ कि तब आपने सोचा नहीं था, लेकिन हमने आज तक के सबसे ज़्यादा मेडल टोक्यो ओलंपिक्स में जीते.
उसके बाद कॉमनवेल्थ गेम में हमने 61 मेडल जीते, उससे पहले पैरालंपिक्स में 19 मेडल जीते, डेफ ओलंपिक्स में 28 मेडल जीते। और जब हम एशियन गेम्स में जाने लगे तब मैंने कहा था इस बार 100 पार। तो सबको लगा नेता है, नेता जैसा भाषण दे दिया, इस बार 100 पार होगा नहीं होगा। बट मुझे विश्वास था मेरे खिलाड़ियों पर जो हमने सुविधाएं दी थी, और इस बार भारत ने 107 मेडल जीते हैं एशियन गेम्स में। और जब पैरा एशियन गेम्स में हमारी टीम गई तब मैंने कहा एबल एथलीट्स का रिकॉर्ड तोड़ोगे, कैन यू ब्रेक द एबल एथलीट्स रिकॉर्ड? दे सेड ऑफ कोर्स यस। और उनका कॉन्फिडेंस लेवल देखने वाला था। और हमारे पैरा एथलीट्स ने पैरा एशियन गेम्स में 111 मेडल जीतने का काम किया है। तो मुझे तो विश्वास है, मैं आपके दर्शकों से पूछ लेता हूं, आपको विश्वास है पेरिस ओलंपिक में टोक्यो ओलंपिक से बेहतर जीतेंगे अवार्ड्स? मैं आई विल टेक द लिबर्टी, क्योंकि अनुराग जी मौजूद हैं और अनुराग जी ने कहा कि उन्होंने 100 पार का स्लोगन दे दिया था। तो क्योंकि आप यहाँ हैं तो राजनीति से भी जुड़े 2-1 सवाल ज़रूर पूछ लूँ मैं आपसे। 400 पार का नारा भी दे दिया है अब की बार, लेकिन वो जो सामने गठबंधन है, वो जो लग रहा था कि इकट्ठा नहीं हो रहा है, अब इकट्ठा होता हुआ दिखाई दे रहा है। गठबंधन दिल्ली में भी हो गया है, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में गठबंधन, बाकी गुजरात में हो गया है, हरियाणा में हो गया है, ऐसे ही इकट्ठा होते जा रहे हैं। लग रहा है पश्चिम बंगाल में भी शायद कुछ बात बन जाएगी। तो ये इकट्ठा होने में कुछ फ़र्क पड़ेगा वो 400 पार के नारे पर? 0 + 0 कितना होता है? ये कोई पहली बार इकट्ठे हुए हैं? ये कोई पहली बार इकट्ठे नहीं हुए। मैं आपके याद करवाऊं, 2017 में उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव था, 2022 में यूपी का विधानसभा चुनाव था, 2019 का लोकसभा चुनाव था। ऐसे कई चुनावों में ये महागठबंधन जो काफ़ी ठग, यानी कि जिनके बाकी तरह के आरोप भ्रष्टाचार के लगे हैं, कोई बेल पर है, कोई जेल में है, वो सब लोग इकट्ठे हुए हैं। लेकिन ये चाहते क्या हैं? They're going to scratch each other's back just to support them because they are facing the corruption cases. और ये भ्रष्टाचार के आरोप जो सह रहे हैं, और श्रीमान राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी भ्रष्टाचार के मामले में बेल पर हैं। अरविंद केजरीवाल जी जो सबको ईमानदारी के सर्टिफिकेट बांटते थे, वो 7 बार ईडी के समन आने के बाद भी आज जाते नहीं। लेकिन जब राजनीति में नहीं थे तब ज्ञान बांटते थे कि कांग्रेस वालों को भ्रष्टाचार के चलते बाहर करो। जितने ईमानदारी के सर्टिफिकेट इन्होंने अपने हेल्थ मिनिस्टर को दिए, वो 1.5 साल जेल में रहे। इन्होंने अपने शराब घोटाले वाले मंत्री को दिए, वो जेल में है। उप मुख्यमंत्री वो हैं, अपने सांसद को ईमानदारी का सर्टिफिकेट दिया, सब लोग जेल में हैं, किसी को बेल भी नहीं मिली। तो आप लोगों के पास मोदी के खिलाफ क्या लेके जा रहे हो? क्या आपके पास ईमानदारी है? मैं गर्व के साथ सीना चौड़ा करके और सिर उठाकर कह सकता हूं, 2014 में हमने कहा था भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे। आज 10 साल के बाद मैं कहता हूं 10 पैसे का भी भ्रष्टाचार भारत में नहीं हुआ, तो मोदी सरकार में ईमानदारी के साथ हमने काम किया है और आगे भी करेंगे। लेकिन देश में जो 70 साल में इन्होंने नींव डाल रखी भ्रष्टाचार की, वो सिस्टम में ख़त्म करते करते समय लगेगा। लेकिन आज मैं अपनी सरकार के बारे में तो कह सकता हूं, ईमानदारी के साथ मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री ने काम किया है। दूसरा, आज हम भारत को, आपने बार बार सॉफ्ट पावर की बात कही। आप किसी भी पावर की बात कर लें, सॉफ्ट पावर की बात कर लें, हार्ड पावर की बात करें, इकोनॉमिक पावर की बात करें, आज हर क्षेत्र में भारत आगे जा रहा है। सॉफ्ट पावर में स्पोर्ट्स से लेके सिनेमा तक, कल्चर से लेके स्पेस तक हमारा बहुत बड़ा योगदान है। हमारी फिल्में, हम दुनिया के सबसे बड़े फिल्म निर्माता वाले देश हैं, लेकिन बड़े पर्दे वाली फिल्में हमारी दुनिया में जाके अच्छी नहीं करती थी। बट देयर इज नथिंग रीजनल टुडे। If your content is good, it quickly becomes from regional to national, then to international. And that is how RRR has won the award. That is how Elephant Whisperer has won the award at the Oscars level. एक नहीं अनेक प्लेटफॉर्म पर भारत के कंटेंट ने अपनी धूम मचाई है। और आप मेरी बात मान के रखिए, अगले 10 वर्षों में इंडिया विल बी द कंटेंट हब ऑफ द वर्ल्ड, विल बी द कंटेंट कॉन्टिनेंट, इफ आई हैव टू से दिस। और ये मैं
बहुत गंभीरता से इसलिए कह रहा हूं, टेक्नोलॉजी का जो रोल है, आज भारत में पोस्ट प्रोडक्शन की बहुत सारी संभावनाएं बनी हैं। हमारे यहाँ पे स्टोरी टेलिंग की कंट्री, बहुत सारे अवसर हैं नए कंटेंट क्रिएट करके देने का। ओटीटी ने एक नया अवसर खोले हैं। दूसरा मैं कहना चाहता हूँ, स्पोर्ट्स में हमने अच्छा किया। स्पेस की दुनिया में जापान और यूएस अब पहुंचा है। हमारे भारत ने चंद्रयान मिशन की सफलता करके साउथ पोल पर चंद्रमा के तिरंगा झंडा फहरा दिया है। ये भारत ने किया है स्पेस सेक्टर में भी। अब कोई सेक्टर आप लेंगे इकोनॉमी से लेके, बाकी हम अच्छा ही कर रहे हैं। और मैं उत्तर यही देना चाहता हूँ, जब हम अच्छा कर रहे हैं तो मुझे लगता है लोग भी अच्छा ही रिजल्ट देंगे, वोट भी अच्छा ही डालेंगे। So you monitor what we watch as the Minister for Information and Broadcasting. What is it that you watch? आप एक युद्ध से दूसरे युद्ध चले जाते हो, कभी यूक्रेन कभी इजराइल का दिखाते हो, लेकिन मैं यही कहता हूँ, युद्ध के समय भी दुनिया भर की सप्लाई चेन डिसरप्ट हुई, लेकिन उस समय भी भारत ने जो फर्म स्टैंड लिया, चाहे ऑयल बाइंग का था, गैस का था, भारत ने अपना स्टैंड क्लियर किया कि हमारे लिए प्राथमिकता भारत की 140 करोड़ की जनता है। तो दुनिया को झुकना पड़ा और भारत की बात को मानना पड़ा। दूसरा, कोविड-19 पैंडेमिक के समय दुनिया के ऊपर अगर हम निर्भर रहते तो शायद 140 करोड़ भारतीयों को 220 करोड़ वैक्सीन नहीं लगती। आज अगर 220 करोड़ वैक्सीन मुफ्त में लगी है और 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज मिला है, और अगले 5 साल की गारंटी भी मोदी की गारंटी है, और 4 करोड़ पक्के मकान, 10 करोड़ बहनों को रसोई गैस का सिलेंडर, 12 करोड़ शौचालय टॉयलेट्स मिले, 13 करोड़ घरों को नल से जल मिला, 60 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत के 5 लाख का इलाज हर साल मुफ्त मिलता है। तो मैं ये कह सकता हूँ, ये तभी होता है जब सरकार डिलीवर करने वाली आती है। और आपका कंटेंट मैं टीवी पर देखता हूँ, आप अच्छी स्टोरीज भी दिखाते हैं कि मोदी सरकार ने कैसे अच्छा काम किया है। Then let's also involve Varun in this. He's feeling a little left out. Let's talk about fitness, Varun. I know that you, Mr. Thakur, you guys are fitness enthusiasts. You're passionate sports lovers. I've got to ask you this. India being one of the youngest populations, right? Average age of an Indian is 29. How can we make sports an intrinsic part of our culture across age groups? Varun, your thoughts on that? It's a difficult question. I haven't thought about it. Let me just think on the go. I think sports is not really a discipline. According to me, sports is an attitude. Like some time back, even today, if I have to recruit even a top management person, in his resume, I look through whether he's played any games and sports or not. So I believe that we have a great opportunity to grab if we can inculcate sports to be an attitude in our country's citizens, which is what happening now. Now, if you see what IPL has done, today you have one full, almost if you replace the 11 top players of Indian cricket team, you have another 11 filling up. India would produce so many pace bowlers, a series of them we've never thought. That's what IPL has done. And IPL also has inculcated appetite in youth. As I always maintain that there's no harm in earning fame and money, provided you have put in effort for it and you have the competence for it. So that is what is the opportunity to be grabbed. And badminton is another game where I think today there would be several players in top 50 which we've never seen. This sensitivity, when we celebrate these winning moments in media across the country, that's what drives the youth of a country to excel and to be accoliated, to be celebrated, to be awarded. So that's what India's moment is all about. Okay, I've been asked to wrap up, but the journalist in me wants to ask you one last question, sir. Prime Minister Modi has spoken about the bid to Olympics for 2036. Is India ready? Are we ready to host an event of that scale in our country? And if we are, what city could that be in?
I think Prime Minister Modi made it very clear during the IOC session in Mumbai that India is very serious to host the 2036 Summer Olympics, and before that we want to host the 2030 Youth Olympics. And I have a reason to say so. If you look at India today, in the last 10 years, from fragile 5, we have become the fifth largest economy of the world. On the other hand, if you look at Self-Reliant India campaign, the Atmanirbhar Bharat, from being the second largest importer of the mobile phones, India has become the second largest manufacturer of the mobile phones. From 85% of the toys being imported from overseas, now India has 90% of the toys production made in India and exporting to the world. From being the largest importer of the defense equipment, India has 1 lakh crore defense production last year, and which had 16,000 crore rupees export as well. So if you look at sector to sector, India is doing extremely well. Economy-wise, we are the 5th largest. In the next 5 years, we're going to be the 3rd largest. By 2036, Indian economy will be much larger. On the other hand, in India, if you look at the capex, the investment on the capital expenditure, it has gone up. Last year it was 10 lakh crore rupees. This year it is 111 crore rupees. That means 11 lakh crore plus will be spent to create infra. On the other hand, the cities are growing, the infrastructure is growing. From 74 airports, we are 150 airports today. The sports infra is becoming better and better with each passing day. We have the 1.4 billion population, out of which 65% is below the age of 35 years. That clearly shows 1/6 of the humanity, the 1/6 of the total population of the world lives in India. So what could be a bigger market? We have 1 billion mobile phones, smartphones. We have 1 billion internet connections. We have the largest population to see the Olympic sport last time. And this time it makes more sense for the IOC to give 2036 Olympics to none other than Bharat, our India. So that will be a very serious bid. Okay, we have been asked that this is a wrap from us for now. Thank you so much, Mr. Minister, for joining us. Thank you, Barun, for joining us. Thank you. All right, ladies and gentlemen, huge round of applause for TV9's Meha and Sumaina, and of course, requesting Shri Anurag ji and Mr. Barun Das to please stay on stage and move toward the awards section of the stage, because it is time now for our Nakshatra Samman Awards, the first set of Nakshatra Samman Awards for the night, isn't it, Neha? That's correct, Krishna. Now, as India gears up for sports ascendancy, Requesting Sir, Anurag ji and Barun Sir to please move on to the awards section of the stage. thank you very much, gentlemen. All right, now as India gears up for sports ascendancy, the importance of infrastructure development remains supreme. And Shri Anurag Thakur has been instrumental in developing sporting infrastructure across India, which has helped Indians from humble backgrounds to excel in a wide range of sports going way beyond cricket. This is clearly mirrored in the Nakshatra Samman winners from the world of sports. That's right. The stories of all those sporting winners of Nakshatra Samman, from an athlete, Harmilan Bains, to badminton player Anmol Kharb, to para-cricketer Amar Hussain Lone, to professional shooter Sift Kaur Samra. They are all success stories built by the creation of infrastructure in India. As they say, banega to badhega India, isn't it, Neha? Absolutely, no two ways about it. Well, we will be felicitating all the sports Nakshatra Samman winners later tonight. But for now, let's get on with our first set of Nakshatra Samman with some very special winners. Time now to celebrate an actress who has been enthralling us with her performances for decades now. From the silver screen to OTT. She is the original must girl. She was a heartthrob of the 1990s and 2000s, is once again ruling our hearts thanks to OTT. She's performed some breakout roles that thrilled the public and critics alike. She's given power-packed performances, and now
She is reinventing herself for the new age entertainment space. Ladies and gentlemen, the TV9 network Nakshatra Samman goes to the ever-shining star Raveena Tandon. Ladies and gentlemen, huge round of applause for Raveena Tandon, requesting her to please come on stage to collect the award from Shri Anurag Thakur ji and Mr. Varun Das. Raveena, for being here with us. All right, if we can ask her a quick question. Yeah, she has a mic. She has a mic. Okay, she has Raveena, we have a quick question to ask you. You know, just realized you've been winning an award from your first performance. You won a Best Debutante award. From then for the movies to now OTT. And now this is the Nakshatra Samman. Can you tell us what does it feel like to keep coming up on award stages like this all the time? First of all, thank you and a very good afternoon and a good evening to all of you here. I was just partially sitting there and hearing this very interesting conversation happening right now on stage, and I'm looking forward to my session as well. But nonetheless, thank you very much for this honor, and it always feels great from then, like you said. Anurag ji just said that why are we relegated to only 1990s heartthrobs whereas we women now are still very relevant, You still very working, much a heartthrob even and today, still leading. Raveena. We are very much there, and we are here to stay forever and ever. But nonetheless, thank you so much for this, and it feels great always to be appreciated, whether it was the first debut award or it is now this very ever-shining star award. I just completely love this, and thank you again. And like I said, I'm looking forward to being up there with you guys very soon. Can't wait, We Raveena. can't wait. And that award couldn't have been named better for somebody like you. Ever shining star. Ladies and gentlemen, huge round of applause Thank for you. Raveena Tandon. Tandon. All right. So that's the first big Nakshatra Samman award for the evening.